This is in the context of the recent verdict given by the Supreme Court on plea by the ADR, which is Association for Democratic Reforms, which is a non-governmental organization. So it filed a case in Supreme Court regarding 100% cross verification of VVPAT machine and EVMs. Now we will further understand what EVM means and VVPAT means. This verdict was given by the Justice Sanjay Khanna and Justice Deepinder Datta. So first of all, we will start from basic. What is Article 324? So Article 324 gives Election Commission of India the power and the responsibility of conducting election at union and the state level. At the union, the Lok Sabha election, which is being conducted at the present, the 18th general Lok Sabha election. Now, initially the Election Commission of India before 2000 conducted election through ballot papers, means the voters voted through ballot paper, but then it shifted to electronic voting machine in 1982 for the first time, which was in Parur constituency in Kerala, and for the whole India mass level we shifted in 2004 Lok Sabha election. Now, electoral voting machine basically has three components: ballot unit, control unit, VVPAT, and SLU, symbol loading unit. Now, let me explain what all this means. So, starting from the very basic EVM, electronic voting machine. So, we can see this is control unit, this is ballot unit, and this is VVPAT, which is voter verifiable public audit trail. Okay. नाउ जब हम वोट देने जाते हैं तो देयर इज़ अ रूम और देयर इज़ अ space where no one else is allowed, and only the one who is casting the vote is allowed in that space, and that include basically two machines, which is ballot paper and VVPAT. So in ballot paper we cast vote to a single candidate by pressing a button on this side. Here we have serial number, here we have candidate name and candidate's political party symbol. Now when we cast the vote, how does we cast the vote? When we go inside the polling booth, we show our paper, it gets checked, and then we are allowed to enter in the room where the machines are put. So now this is control unit. Here who sits, either the polling booth officer sits or district election officer sit, they, whenever a person enter to this room or this table, the person sitting here press a button which basically activates this two machine. Okay, as soon as the person enter this place, he or she gives vote to his preferred candidate, and then a paper slip is printed by this machine, which can be seen for 7 seconds from this transparent glass, and then it goes down this and then that paper go down to this opaque box which is sealed. Now, how does that machine print the candidate symbol and candidate party's name and candidate name? This is done through another machine, that is SLU, symbol loading units. So this is a machine designed by the two companies. Basically, two companies are responsible for making all this machine in India, that is Bharat Electronic Limited and ECIL. So this machine is used to load candidate name and symbol to VVPAT unit. This is done 1 or 2 days before election, when the Election Commission of India decides the order and preference of the candidates electing from that constituency in one particular order. Then that data is fed into this machine, and this machine basically print that data in this VVPAT slip when a person vote to any preferred candidate from this list. And as soon as he votes, this machine beeps green color, which gives a signal to the public booth officer that the vote has been casted, and then he press the button and then the machine gets off. And as soon as the another candidate enter, once again this machine is pressed and these two machines start working. Now what happened before the Supreme Court verdict? That ballot unit, VVPAT and control unit, all these machines were kept for 45 days under seal or under
security, but SLU was not kept for 45 days after the election results were announced. So how they demanded 100% cross verification. So what happened prior, or what happened till now? So basically Election Commission of India, what it did, कि from every constituency they selected any 5 random polling booth. Okay, when they selected any 5 random polling booth, they cross verified the data. द वीवीपैट, इसमें जितने भी कागज़ गिरे होंगे, जब भी एक इंसान या फिर जितने, मान लीजिए 100 इंसान ने यहाँ पे वोट दिया, तो 100 पेपर यहाँ पे अंदर गिरे होंगे, ये इस डाटा से मैच करते थे कि 100 वोट, अगर 100 वोट्स में से 20 वोट अगर 6 नंबर कैंडिडेट को गए हैं, तो 6 नंबर के कागज़ टोटल यहाँ पे 20 होने चाहिए. तो बस ये दोनों वेरीफाई होता था. और वीवीपैट मशीन, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये तीनों मशीन सील करके 45 डेज़ के लिए आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन रिजल्ट को रख दिया जाता था. पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि SLU जो सिंबल लोडिंग यूनिट है, उसको भी 45 डेज़ तक रखना है. एंड अगर कोई भी जो इलेक्शन लड़ रहा है इन 6 कैंडिडेट्स में से, इसमें से जो सेकंड और थर्ड पोजीशन में आएगा और उनको संदेह है कि कुछ तो टैम्परिंग हुआ है, सो दे कैन रिक्वेस्ट after the results are announced to the polling officer to cross verify all the votes casted and show the SLU. Now this should be done after the 7 days. After the 7 days results are announced. अगर ये सब चेक करवाना है तो इन 3 मशीन के लिए there is time limit of 45 days, but for this machine there is time limit of only 7 days. Now what happened through this verdict? So basically Supreme Court allowed that any person who is having grievances, or any candidate who is having grievances, who secured second or third position in the election, has a right to ask for the has a right to see the EVM software, which include the microcontroller. So basically what happened in this case is, the EVM manufacturers, they themselves come and show the software to the person who has filed a clearance or has filed a clarity over the elections. Now they will come and show all the process, and this should be done before after the election results are announced and before 7 days from the day election results are announced. So what was the conclusion of whole case? So basically Supreme Court allowed the continuance of the existing practice, that is verification of EVM and VVPAT in any 5 randomly selected polling booths per constituency. And the other thing was, Supreme Court directed Election Commission of India to secure the SLU, symbol loading unit machine, for 45 days. That is, जैसे यहाँ पे ये 3 मशीन को 45 डेज़ के लिए सील करके रखना था, अब इस मशीन को भी सील करके रखना है. अब इलेक्शन कमीशन के सामने चैलेंज ये है कि SLU को वो रोटेशनल बेसिस पे यूज़ करते थे, लाइक इट वॉज अ रीयूजेबल मशीन. सो ये अगर फेज़ 1 ऑफ इलेक्शन में यूज़ हो रहा है, तो ये फेज़ 7 में भी यूज़ हो सकता था. बट अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये और भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये rotational basis पे यूज़ नहीं हो सकता. This also needs to be keep sealed for 45 days after the election dates are announced. And what are the 5 major arguments which got rejected in this case? The first one is full cross verification, that is 100% verification अभी भी नहीं होगा EVM और VVPAT मशीन का. 5% जो पर कॉन्स्टिट्यूंसी या 5 पोलिंग बूथ्स पे होगा पर कॉन्स्टिट्यूंसी पे, वही फार्मूला चलेगी. द सेकेंड वन इज टैम्परिंग विथ EVM, कि EVM के साथ छेड़छाड़ कर दिया जाता है, EVM ढंग से काम नहीं करता. तो इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम माइक्रो कंट्रोलर, जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो जिसके पास बस 1 टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, हम वो अलाउ कर देंगे उस कैंडिडेट को चेक करने के लिए, अगर उसको ग्रीवेंसेस होगी, जिसने सेकेंड और थर्ड पोजीशन सिक्योर किया है इन दैट इलेक्शन फ्रॉम दैट स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी. फॉर द EVM VPAT डिस्क्रिपेंसी, जो कि पूरे जब से EVM आया तब से बस एक बार हुआ था, वो भी मेदुकुर इन आंध्र प्रदेश इन 2019 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, कि EVM और VVPAT के जो वोट्स थे वो मैच नहीं कर रहे थे. बट इसके पीछे भी रीज़न था. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाद में वेरीफाई किया, जो मॉक पोल होता है, जो इलेक्शन स्टार्ट होने के पहले सुबह में 50
मॉक 50 वोट्स कंडक्ट कराए जाते हैं और फिर उसको काउंट किया जाता है जो वो उन लोगों के सामने जो ऑलरेडी सुबह सुबह आ चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था कि मॉक पोल जो सुबह में हुआ था उसका डाटा क्लियर नहीं हुआ था, इसी वजह से ईवीएम के वीवी पैट और ईवीएम के जो डाटा थे वो मैच नहीं कर रहे थे। Now giving the other argument of the ADR was giving VVPAT slip to the voters. VVPAT slip जो यहाँ पे जब हम वोट करते हैं तो वो जो VVPAT स्लिप जो है वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है। तो ADR बोल रही थी क्या पता वो शीट यहीं पे रह जाए, वो नीचे ही नहीं गिरती हो, या कुछ सिस्टम सेट हो जहाँ पे सारी शीट्स नीचे ना जाए, क्योंकि नीचे तो ओपेक बॉक्स है। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक कैंडिडेट जो वोट करने जा रहा है उसके पास 7 सेकंड का टाइम है, वो इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स से देख सकता है कि नीचे जा रही है और ये पूरी बॉक्स सील्ड होती है, तो पेपर गायब होने की कोई चांसेस ही नहीं है। एंड द अदर आर्ग्यूमेंट वाज रिटर्निंग टू पेपर बैलेट विच इज़ not an option considered by neither Election Commission of India nor Supreme Court at prima facie level. So that was all about the topic. I hope this video gave some clearance about the topic.